So today we will be discussing from Bhagavatam 3rd canto 19th chapter, the killing of the demon Hiranyaksha, text number 17. Atha Urudha Asrujat Mayam Athorudha Srujan Mayam Athorudha Srujan Mayam Yoga Mayeshware Hara Yoga Mayeshware Hara Yoga Mayeshware Hara Yam Vilokya Prajaha Trasta Yam Vilokya Prajastasta Yam Vilokya Prajastrasta Menire Asya Upasamyamam Menireyesyopasamyamam जो अस्या उपसंयमम है उसका संधि हो जाता है तो अ वी डोंट प्रोनाउंस, अ का उच्चारण नहीं करते हैं. मेनिरेस्योपसंयमम एक वो शब्द हो जाता है, एक पद हो जाता है. मेनिरेस्योपसंयमम, अ विल नॉट बी देयर, अ नहीं होगा. मेनिरे अस्या मेनिरेस्या मेनिरेस्या, अ का साउंड नहीं आता है. मेनिरेस्या नहीं तो छंदस गलत हो जाता है. ये सब छंदस के अनुसार इसका रचना किया है व्यासदेव ने. 18,000 श्लोक का ये भागवत व्यासदेव ने पूरा छंदस के अनुसार किया है. यानी हर एक श्लोक का गिनती करते हैं कितना उसमें अक्षर है और इट इज अ डेफिनेट नंबर. Every shloka has got a definite number of letters. So that is not possible for ordinary human beings. साधारण मनुष्य के लिए, कोई कवि के लिए 18,000 श्लोक का रचना करना छंदस के अनुसार संभव नहीं है. ये केवल जो भगवान कर सकते हैं या भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त जो भगवान से शक्ति पाए हैं, एम्पावर्ड बाय गॉड, वुड यू से फॉर एम्पावर्ड, सशक्त हैं, वैसे भक्त ये भागवत जैसा ग्रंथ का, जैसे वाल्मीकि जी, वो 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण का रचना किया, fully according to chandas. That is not possible for ordinary human being. So मेनिरेस्योपसंयमम, अभी मैं इसको बोलूँगा, आप बराबर से उच्चारण कीजिए. मेनिरेस्योपसंयमम अथोरुधा सृजन्माया योगमायेश्वरे हरा यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्. अथोरुदासृजन्मायाम् योगमायेश्वरे हर
यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् अथोरुधा सृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्तस्ता मेनिरेस्योपसंयमम् अथ then Urudha in many ways asrujad he cast mayam conjuring tricks Yogamaya Ishware, the Lord of Yogamaya. Harau, at Hari. Yam, which. Vilokya, after seeing. Prajaha, the people. Trastaha, fearful. Menire, thought. Asya, of this universe. Upasamyamam, the dissolution. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Translation. The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yogamaya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. Please repeat this translation. The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yogamaya. At the sight of this, the people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. You have in Hindi? Okay, read the translation. अनुवाद. किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया. यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है. Purport by Srila Prabhupada. The fighting enjoyment of the Supreme Lord with his devotee, who had been converted into a demon, appeared severe enough to bring about the dissolution of the universe. This is the greatness of the Supreme Personality of Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. Read the thing. तात्पर्य. भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है. यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है. उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. So this verse is
explaining the fight between the Supreme Lord, who has appeared in his boar form, Varaha avatar, and the demon Hiranyaksha. तो यह श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने वराह रूप में अवतरित हुए हैं और असुर हिरण्यक्ष इनके युद्ध का वर्णन करता है. So this demon, he is employing many conjuring tricks against the Lord. So what are conjuring tricks? Because they have some mystic power, yogic power, they can create some illusory effects as if they are destroying or as if they are bringing about some rain or fire or some magical effect. सो ये जो असुर है ये कुछ छल कपट की चालें प्रस्तुत कर रहा है. सो ये छल कपट की चालें क्या होती हैं? ये सब योगिक शक्तियों द्वारा होती है, जिसमें वो कुछ विध्वंसक चीज़ें जैसे बरसात और इस तरह की चीज़ें, तूफान, ये सब ला सकता है. ये सब जादुई चालें हैं. So actually there is no real fire, no real rain, but it looks like that for the uninformed people. वास्तव में वहाँ पर कोई अग्नि नहीं है, कोई बरसात नहीं है, ये सब मिथ्या है, लेकिन ये सब उनके लिए असली प्रतीत होता है जिन्हें जानकारी नहीं है. Just like when you, I don't know whether nowadays you have this magic shows. Earlier when I was a kid, my father used to take me for magic shows. So the small children, when they see that magician turning his hand, he will have one bottle in his hand. He will turn the bottle and say, now you see 100 bottles. So only who will see 100 bottles? Only the small children will see. Or even if adults see an optical effect, the effect of light, still the adults know it is simply a magic trick. It appears like 100, but there's only one bottle in his hand. Children will not understand. They don't know what's the magic trick. So they think, oh, he has made one bottle into 100 by just turning his hand like that. सो पहले के समय में जादूगर होते थे जो अपना जादू का खेल दिखाते थे. सो कभी वो अपने हाथ में एक बॉटल पकड़ते थे और कहते थे कि अब मैं आपको इसको 100 बना के दिखाऊंगा. तो जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो उसको 100 देखते थे, लेकिन जो वयस्क लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको पता था कि ये सब भ्रम है, वास्तव में वो एक ही बॉटल है जो 100 के रूप में प्रतीत हो रही है. Similarly, those who do not know what this material world is, when they see any effect of this mystic power, or they even actually see the dissolution, they know that actually what is happening as dissolution or destruction is only the material interaction of the gunas. सो जो लोग संसार को नहीं समझ सकते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें हैं ये देखकर भ्रमित हो जाते हैं. लेकिन यहाँ तक कि जब पूरे संसार का प्रलय आना है, तब भी उनको पता है कि वास्तव में प्रलय जो है सिर्फ 3 गुणों का ही आदान प्रदान है. So we also as transcendentalists, by practicing bhakti, we should actually get enlightenment by which we will see this entire material world, including our own body and all our material possessions, as temporary effect of the 3 gunas. सो हम भक्ति के मार्ग पर है. सो हमें अपने भक्ति के अभ्यास से इस ज्ञान के स्तर पर आना है जहां हम इस पूरे भौतिक जगत को और अपने शरीर को 3 गुणों के प्रभाव के रूप में देखें. That's not easy, because we are so attached to our body, we are so attached to our possessions. Not only attachment, we think that we have no existence beyond this. But if we chant Hare Krishna properly and hear Bhagavatam or study Bhagavatam, then gradually the misunderstanding within the heart will clear away. किंतु ये आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर को और अपने इस शरीर से जुड़े वस्तुओं से इतने आसक्त हैं. केवल आसक्ति नहीं है, हम सोचते हैं कि यही इसके परे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है.
इसलिए ये समझ पाना आसान नहीं है। किंतु जब हम हरे कृष्णा का जप करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, तो फिर ये जो अज्ञान है हमारे हृदय से साफ होता है। So sometimes devotees ask, how do I know I'm advancing? So this is one simple way of understanding whether you're making advancement, whether you're able to see this body as simply a temporary effect of this material nature. सो कभी कभी भक्त पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम उन्नति कर रहे हैं। सो उन्नति का एक मापदंड ये है कि क्या आप इस प्रकार समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये केवल इन 3 गुणों का नश्वर प्रभाव है। We all know it. As far as knowledge is concerned, everyone knows I'm not this body. At least devotees know. But are you able to experience that? Whatever happens to the body, I can chant Hare Krishna. I can remember Krishna. I can think of Krishna. And simply by thinking of Krishna, I am aloof from this body. Simply by remembering Krishna, I am aloof from this body. Whatever happens to this body, especially at the time of death, is important. सो हम सब जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये जानना बहुत आसान है, किंतु इसके अनुभूति तब होती है जब ये शरीर को कुछ भी हो जाए तो भी हम क्या कृष्ण के नाम का जप कर पा रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, कृष्ण में अपने चित्त को स्थिर कर पा रहे हैं। सो किसी भी परिस्थिति में अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर ये उन्नति का मापदंड है। So we should practice before death comes when some sickness is there. For example, you become very, very sick. You should not, but unfortunately sometimes it comes without our desiring, even after taking a lot of care. Supposing somebody is having high fever, they're lying on the bed, they're not able to get up. Then are you able to lie on the bed and chant Hare Krishna and think of Krishna, not think of your sickness? This is the test. सो परीक्षा यह है, हमें सबसे पहले इसका अभ्यास करना है। हमारा अंत काल आने के पहले मान लीजिए कि हम बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं, तो क्या उस गंभीर रूप से बीमार, तेज बुखार है, हम अपने चारपाई पर लेटे हुए हैं, तो उस अवस्था में भी क्या हम भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं, हरे कृष्णा का जप कर पा रहे हैं? सो ये है वो परीक्षा। So next time you get an opportunity like this, please try to chant Hare Krishna. No, I'm serious about this. I'm saying something serious. That you chant Hare Krishna and think of Krishna, think of the holy name, not think of your sickness. After you've taken all your medicines. Don't do this without taking medicines. सो भविष्य में कभी ऐसा अवसर आए जब हम अत्यंत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं, तो फिर हमें उस अवस्था में भी भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का स्मरण करना है और इसका अभ्यास करना है। लेकिन हमें पहले अपना मेडिकेशन, अपनी दवाइयाँ लेनी है। ऐसा नहीं कि दवाइयाँ छोड़ के हम सिर्फ ये करें। So that will, in the beginning it will be difficult. You'll think that only when I am not sick I can chant, otherwise I can't chant. Yeah, it appears like that, but somehow you force yourself to chant. Prabhupada says you force yourself to chant Hare Krishna, Hare Krishna. Even if you have pain, still somehow your tongue should be vibrating and somehow you chant and try to shift your mind away from pain and sickness to Hare Krishna. सो प्रारंभ में ये बहुत कठिन लग सकता है और हमें क्षमता भी नहीं हो सकती, किंतु अगर हम उस अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में, तो भी हमें अपने आप को जबरदस्ती ये हरे कृष्णा जप में लगाना है। हमारे शरीर की अवस्था ठीक ना हो तो भी हमें अपनी जिह्वा से इस हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करना है और हमें अपना मन इस बीमारी की अवस्था से हटाकर कृष्ण में लगाना है। You'll see miracles happen. I've experienced it, that's why I'm telling this. That earlier when I used to fall sick, I used to think till I get better I'll not be able to chant. So I'll pray to Krishna, I'll chant after I get better. But
once I was sick and I was thinking, why should I not chant now? In fact, it is very important to chant now more than when I am better. Anyway, when I am better, I will chant. But am I able to chant when I am sick? Let me try. So initially it was just very, very difficult. Somehow I was not able to chant. But then I was trying and trying and trying and trying. Then finally I succeeded in chanting. And then as I was trying to hear, I was seeing that I was forgetting about the sickness. It happens, actually happens to devotees. You try this if you're not tried earlier. So, आप देखेंगे कि इससे चमत्कार होते हैं. सो महाराज श्री अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ वे बीमार थे. सो उन्होंने सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ अवस्था में मैं जप करूंगा, अभी ठीक होने देता हूँ. किंतु फिर उन्होंने सोचा कि अगर स्वस्थ अवस्था में तो मैं वैसे भी जप कर सकता हूँ, लेकिन इस अवस्था में मुझे जप करना है. सो उन्होंने प्रयास किया. प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन प्रयास करते 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 वे जप कर सके. और जब उन्होंने जप को सुनने में अपना ध्यान लगाया, तो फिर उन्होंने देखा कि उनका पूरा मन जो है वो उस बीमारी की अवस्था से हट चुका है. I'll tell you one more interesting experience I had, not with me, with somebody else. I was admitted to hospital for some gastritis. It was in 2002. And my neighboring bed, there was another person was having kidney problem. So he was to undergo surgery the next day, and he was admitted. So some tests were done, and the next day was the surgery. And night, the doctor came, checked up, and said, tomorrow is your surgery. So now you take nice rest. Tomorrow morning, we'll do the surgery. Okay. The doctor went away at around 8 p.m. Afterwards, he began experiencing pain. Shall I tell the whole thing or you tell me parts? Okay. So he started experiencing pain, and then the pain became too much. And then he was almost unbearable pain, so he was screaming. And then the duty nurse came, and she tried to give one painkiller injection. And she gave painkiller injection, and he got some relief. And then we are all like in the ward, we are all trying to go to sleep. It's night. After the doctor has finished his duty, around everybody is checked. And then it seemed like his pain had subsided because he was just next to me. And then after 15 minutes, again he started complaining of pain. Then again the nurse came and said, I have given you one painkiller, I cannot give you more. Okay, you have to tolerate. So he was telling unbearable pain, I cannot tolerate in the abdomen region. Then the duty doctor was called. What can be done? The duty doctor came and said, she has given you one painkiller, more we cannot give because tomorrow you have to undergo surgery. That's the maximum we can do. And then he said, somehow try to bear this pain. Little time it will just subside. But he was shouting and screaming and telling unbearable pain. Then I went to him and thought that let me tell him to chant Hare Krishna. It is this time for relief from pain, at least he will chant. So I told him, initially I thought I'll tell him the whole mantra. In that pain, where will he figure out the mantra? He's never heard the mantra probably. So then I realized, just tell him 2 words. I told him, say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nothing is going inside his mind. So I told him, just say 2 words, Hare Krishna. Hare, bolo, Hare, Hare. Then Krishna, Krishna. फिर से बोलो हरे कृष्णा. You are all telling very nicely. He didn't say in the beginning. Then again I told him, please say, you'll get immediate relief from pain. You say Hare Krishna. So he said, Hare Krishna. He said with great difficulty, he said Hare Krishna. Then I said, keep on telling like this, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So he kept on telling and went off to sleep.
The duty doctor and the nurse are watching, he's gone to sleep. So actually Hare Krishna works. It's not our claim. It's not only the Shastra's claim. It's not only Haridas Thakur telling his experience. It works for anyone who chants. That's the mercy of the holy name. It's the mercy of the Lord. सो महाराज अपना अनुभव बताते हैं कि किसी और के साथ जो हुआ, एक बार महाराज अस्पताल में एडमिट थे और उनके बाजू वाले बेड में एक और पेशेंट थे जिनका किडनी का ऑपरेशन होने वाला था दूसरे दिन। सो ड्यूटी डॉक्टर आए, उन्होंने निरीक्षण किया, सारे चेकअप किए और उसके बाद कुछ औषधियाँ दी और चले गए। फिर उनके जाने के बाद उन पेशेंट को बहुत तीव्रता से दर्द होने लगा। सो नर्स को बुलाया गया और नर्स ने फिर उनको एक पेन किलर इंजेक्शन दिया। उसके बाद थोड़ी देर उनको आराम था, लेकिन फिर से वो दर्द जो है पुनः बहुत तीव्रता से बढ़ने लगा। सो दोबारा नर्स को बुलाया गया तो नर्स ने कहा कि मैंने आपको पहले ही एक पेन किलर इंजेक्शन दिया है, सो अब दूसरा नहीं दे सकते। तो वो दर्द से बहुत करहा रहे थे, बहुत छटपटा रहे थे। तो फिर ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने भी यही कहा कि आपको एक इंजेक्शन दे चुके हैं, सो अब हम दूसरा इंजेक्शन नहीं दे सकते, आप किसी तरह इसको सहन कीजिए और आराम कीजिए। लेकिन उनकी जो परिस्थिति थी वो इस प्रकार नहीं थी, जो दर्द था वो इतना तीव्र था कि वो असहनीय हो रहा था। तब महाराज उनके पास गए, उनसे कहा कि आप हरे कृष्णा जप कीजिए। सो पूरा वो उस अवस्था में नहीं थे कि पूरा मंत्र बोल सके। सो उन्होंने केवल उसके 2 नाम हरे और कृष्ण इसका उच्चारण करने के लिए उनसे कहा। सो उन्होंने उनसे पहले कहा कि आप हरे बोलिए। सो उन्होंने हरे बोला, फिर कृष्ण बोलिए। सो उन्होंने कृष्ण बोला, फिर उसका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस तरह से आप बोलते रहिए। सो जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, जब ये हरे कृष्ण का उच्चारण प्रारंभ किया, सो उनको धीरे धीरे इस दर्द से निवारण मिला। उसके बाद वो हरे कृष्ण ऐसा जप करते रहे और इस जप के साथ साथ वो सो गए। सो जो डॉक्टर थे और नर्स थे वो भी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सो ये हरे कृष्णा का जो जप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये कारगर है, ये सिद्ध है। ये सिर्फ हम दावा नहीं करते या शास्त्र दावा नहीं करते या फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये दावा नहीं करते, ये वास्तव में कार्य करता है, इसका प्रभाव होता है। So you have to practice yourself. You have to practice yourself. This chanting, hearing, and thinking about this, remembering this. Especially the Bhagavatam, the descriptions of the Lord's activities, the Lord's glories. You should actually hear, remember, discuss, talk about this with others, especially family people. You should tell your children or anybody else who is willing to hear. Like generally people discuss about some TV program. You instead discuss about Bhagavatam. Replace those TV program discussion with Bhagavatam discussions. So हमें इसका अभ्यास करना है, हमें जप करना है, सुनना है, स्मरण करना है। और विशेषतः श्रीमद् भागवतम जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन है, सो अपने परिवार में इसकी चर्चा करनी है। अपने बच्चों को या जो सुनने के लिए कहते हैं तैयार है, उनको सुनाना चाहिए इसके विषय में। लोगों में एक भाव है कि वह टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, तो उसके बदले में श्रीमद् भागवतम, इनकी कथा, इनके लीलाओं का वर्णन करना है, चर्चा करनी चाहिए। So I have one suggestion. Because it's not easy to find somebody with whom you can discuss. So you form groups in WhatsApp and then you make a group call. One person can narrate in simple Hindi or Gujarati this whatever story or whatever Leela, and you take turns like that. So if there are 20 people in a group, you tell one story, the 19 other stories, other 19 people will tell. So one story, 20 people hear, and then 20 days this can go on, or 20 weeks this can go on, like this. So you will have the opportunity of reading, then narrating, and then hearing. So in this way, you form groups, and then your whole discussions, your subject matter of thinking, of remembering, everything will turn to Bhagavatam.
सो इसके लिए एक सुझाव है कि व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना चाहिए और जिसमें अंदाजन 20 लोग हैं, सो सब बारी बारी से हर हफ्ते एक भागवतम की कथा उसमें वर्णित करेंगे। सो एक व्यक्ति जो है, एक भक्त एक कथा वर्णित करेंगे और बाकी के 19 जो हैं वो अलग अलग दूसरी 19 कथाएं। सो इस तरह से सबको अवसर मिलेगा कि भगवान की कथा की चर्चा करने के लिए, उसका श्रवण करने के लिए। So just one story you prepare and you narrate, you get to hear 19 without any effort on your part. So the effort is divided, no, 1/20th of the effort. There are 20 people in the group. If the bigger group, 50 people, just 1/50th of the group. So like this, try to find ways and means of actually always absorbing your mind in this Bhagavat Katha, Krishna Katha. That's what Parikshit did. What is Parikshit doing? He was just sitting and he was hearing and fully absorbing his mind in that Katha that Parikshit, Shukadeva Goswami is speaking. सो इस प्रकार जब हम इस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, सो आप एक कथा तैयार कीजिए और उसका वर्णन कीजिए, तो आपको उसके बदले में 19 और कथाएं सुनने को मिलेंगी। सो आपका जो प्रयास है वो बहुत कम हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और अगर आपके ग्रुप में 50 लोग हैं, सो आप एक कथा वर्णित कीजिए, सो बाकी के 49 लोग फिर अपनी अपनी कथाएं सुनाएंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रयास है वो बहुत सरल हो जाएगा। सो हमें अलग अलग तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह हम अपने मन को भागवतम की इन कथाओं में लगा सकें। सो महाराज परीक्षित ने क्या किया? उन्होंने यही किया कि उन्होंने 7 दिन तक पूरे अपने मन को भगवान की कथाओं में एकाग्र, अपने चित्त को एकाग्र किया। It's a very easy way because the katha is very, very, very interesting. If you follow the storyline, just like TV serials, what do? They have some storyline. They'll show one part of the story and then make you wait till the next day or the next week for the remaining part of the story. So when you get involved in the story, then you wait. Next day, what's going to happen? What's going to happen? Same way Parikshit Maharaj was hearing and waiting. Next. Continuously Shukadeva Goswami is speaking and Parikshit Maharaj is eagerly hearing. And in that way he became fully Krishna conscious. It's possible for us also. Not just for Parikshit Maharaj alone. सो ये बहुत सरल विधि है, क्योंकि कथाएं जो हैं वो बहुत रुचिकर होती हैं। सो आप आज कथा का एक अंश सुनेंगे, सो आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आतुरता होगी कि इसका अगला अंश कब आएगा। जैसे टीवी में सीरियल आते हैं तो वो एक कथा पर चलते हैं, कथा सूत्र पर चलते हैं, और उसमें आज एक अंश दिखाते हैं। सो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कि अगला अंश में क्या आएगा और वो आगे कब आएगा, कभी 1 दिन के बाद, कभी 1 हफ्ते के बाद। सो इसी तरह जब परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, सो वो भी इस आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा। सो इस आतुरता से जब वो अपने मन को इसमें लगा रहे थे तो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन गए। And Shukadeva Goswami's narration is also expert narration. Just like when he was narrating Krishna's pastimes, he told this Aghasura pastime, Krishna killed Aghasura, and then he said, this Aghasura pastime, the Brajavasis, the parents of the children, other inhabitants of Vrindavan, they did not hear about this narration for 1 year. So immediately Parikshit Maharaj stopped him and said, how was it possible that every day the children will go back home and tell their mother what happened, what Krishna did, how did they play with Krishna? Because every day something extraordinary is happening in playing with Krishna. So this Aghasura killing was not known to the inhabitants of Vrindavan for 1 year. Immediately Parikshit Maharaj questioned why. So he's hearing very attentively and he's interested to know why. How was it possible? Then Shukadeva Goswami said, the secret for this, you have to hear another pastime of Krishna, Brahma Vimohana Leela. सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम वर्णन करते हैं, सो वे बहुत निपुण वर्णन करते हैं। सो जब वे अघासुर लीला का वर्णन करते हैं, अघासुर वध का, तब वे बताते हैं परीक्षित महाराज से कि अघासुर वध की लीला जो है वो ग्वाल बालकों ने अपने माता पिता को 1 साल तक नहीं बताई थी।
सो परीक्षित महाराज के मन में जिज्ञासा आती है कि वो तो प्रतिदिन जंगल जाते थे, प्रतिदिन वापस आते थे, अपने माता पिता से मिलते थे, तो वो क्या है, वो क्या कारण है कि 1 साल तक उन्होंने इस लीला का वर्णन नहीं किया। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने एक रहस्य जागृत किया और फिर कहा कि अगर इस रहस्य को उजागर करना है तो आपको एक और लीला सुननी है, जो है ब्रह्म विमोहन लीला। Like this is going on, speaking one pastime after another, one pastime after another. So Bhagavatam is presented in a very interesting way. It is not simply stories collection. No, it is presented in a very interesting way. So please systematically go through Bhagavatam. सो इस प्रकार वे एक लीला के उपरांत दूसरी लीला, उसके उपरांत दूसरी लीला, इस तरह से वर्णन करते रहे। सो श्रीमद् भागवतम जो है वो बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत की गई है। ये केवल कुछ कथाओं या लीलाओं का संकलन नहीं है, ये बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत की गई है। Now here, see this Leela is being described by Maitreya Rishi to Vidura. He is describing this fight between Hiranyaksha and Varaha. He is telling that the fight was so very fierce, it appeared like the dissolution of the universe was nearing. It was very, very fierce fight. सो अभी ये जो लीला हम आज की चर्चा में जो लीला है आज के श्लोक में, सो वो भी बहुत रोचक तरीके से प्रस्तुत की गई है। सो मैत्रेय ऋषि श्री विदुर को बता रहे हैं कि ये जो युद्ध था भगवान और हिरण्यक्ष के बीच में, ये इतना घमासान था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस ब्रह्मांड का प्रलय आने वाला है। So I don't know whether nowadays you have these movies. Earlier we used to watch movies where the hero's life is in danger and we're sitting with nail-biting suspense. What's going to happen to him? Is he going to survive? So same way the devatas are watching, and whether Vishnu is really going to kill this demon or sometimes the demon will escape, then their life is in danger. After Vishnu goes back without killing, then the devatas are finished. So it's their own life which is in danger. So they are anxiously waiting, when is Vishnu going to kill this fellow? But it looks like this demon is himself creating so many tricks to actually fight against Vishnu. सो पहले के समय में इस तरह के सिनेमा आते थे जहाँ पर जो हीरो था उसकी पत्नी संकट में थी, तो हीरो उसको बचाने का प्रयास करता था। तो इसी प्रकार इस प्रसंग में हम देखते हैं जिसका जान खतरे में था। हाँ, जान खतरे में था। दैट इज इम्पोर्टेंट। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसका जान खतरे में है। अभी देवताओं का जान खतरे में है। दैट इज व्हाट देवतास आर फेसिंग नाउ। सो अभी जो देवता है उनके प्राण भी संकट में है, उनकी जान खतरे में है। सो अब वो चिंतित है, बहुत व्याकुल है कि क्या भगवान इस असुर को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, क्योंकि असुर जो नाना प्रकार की जादुई चालें चल रहा है। अगर ये असुर बच के निकल गया तो फिर देवताओं का कहते हैं नाश निश्चित है। So similarly, all of us are going to face death. It's going to come sometime. But are we ready? Like Parikshit was ready. Are we ready? So we can become ready by fully absorbing ourselves in Bhagavatam. Then whenever death comes, it doesn't matter, because our mind is fully fixed on Krishna through this Bhagavat. सो हमारी मृत्यु निश्चित है, पर प्रश्न ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं, जैसे महाराज परीक्षित तैयार थे। सो यदि हम अपने मन को भागवतम में स्थिर करेंगे तो फिर किसी भी समय मृत्यु आएगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। So every day if you hear Bhagavatam and wait for the next day, what is going to happen? What's going to happen? And closely follow this storyline, then your mind guaranteed will become absorbed in Bhagavatam. So यदि हम प्रतिदिन भागवतम सुनेंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि अगले दिन दूसरे दिन क्या होगा, तो इस तरह से हमारा जो मन है और हम जो कथा का सूत्र है उसका अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा मन जो है पूरी तरह से भागवतम में
लग जाएगा। Don't read Bhagavatam like, oh, I'm supposed to read 1 hour. No, don't read like that. Get involved in the entire story. Fully absorb yourself. It's a real thing that is happening. This is not an imaginary story. On cinema, they show some imaginary thing. That itself, people are so enamored. So why not in the real thing? Because same way as Krishna, Varaha saved the Devatas, Krishna is ready to save us at the time of our death. He will save us, provided we are absorbed in Krishna. सो भागवतम को इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, इस तरह नहीं। हमें भागवतम में पूरी तरह से लीन हो जाना है, जो उसमें वर्णन है उसको अपने आप को उसके साथ लगा देना है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान में संतृप्त करते हैं, तो भगवान भी जिस तरह देवताओं की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से वे भी हमें रक्षा करने के लिए तैयार हैं। So you get the idea how you have to read or discuss or hear Bhagavatam as a real lifesaver. That's what it is. It is meant for saving our life. It's meant for taking us back to Godhead. So please get into Bhagavatam. So अब हमें एक अंदाजा आता है, एक संकेत मिलता है किस तरह से भागवतम पढ़नी है, क्योंकि भागवतम ही हमारे वास्तविक प्राणों का रक्षक है। जब हम अपने आप को भागवतम में लगाते हैं तो ये हमारी रक्षा करते हैं। Then when your interest in Bhagavatam increases, automatically your interest in other things will reduce naturally. Then very easy to control your senses and everything becomes very easy. जब आपकी भागवतम में रुचि बढ़ती है तो फिर अन्य विषयों से अपने आप रुचि कम हो जाती है, और इस तरह से इंद्रियों का संयम करना भी बहुत आसान हो जाता है। Any questions? कोई प्रश्न है? Yeah. Hare Krishna Maharaj, Dandavata Pranam. So, as you spoke, Maharaj, about we can make WhatsApp group and we can discuss and absorb ourselves in Srimad Bhagavatam. So many times those who are practicing outside of temple, so many times in their mind the question comes, because the temple devotees, their all activities are dedicated to temple only. So their mind is quite peaceful and they can engage themselves in reading Bhagavatam. So we people outside, we are practicing Krishna consciousness, or we are dealing with so many material activities. Our minds are also not peaceful at night when comes, and where is the putting our mind in listening Srimad Bhagavatam and reading all that? So how we So exactly what I'm saying, no? How they watch TV serial? कैसे देखते हैं? In spite of all their problems, they're watching TV serial. So whatever your problems, don't leave Bhagavatam. In between the problems, bring Bhagavatam also. If you have to go to hospital, carry the Bhagavatam to hospital and read the pastime there for whoever is lying on the bed, for the patient. This is the real medicine. Bhavaushadhat shrotra manobhiramat. Bhagavatam itself declares this Bhagavatam is the real Bhava Aushada. This is a medicine for this material disease. Any other question? Hare Krishna Maharaj. Before I ask this question, there is a small disclaimer. I have full faith in the holy name. I've been doing it for many years now. But since those two particular incidents where you said that by taking the name, the pain was reduced. So I'm a doctor by profession. So I know how this, the way the scientific community arrives at any particular conclusion. So my question is, it is the name which worked or taking the mind away from the pain which worked? So in scientific world, when you have to arrive at any conclusion, we do case control studies. So was it a placebo effect? So like if you have to check whether a particular injection works or not,
They will take one injection and one plain water. They will tell the patient, we are giving you the same injection. The two patients, one gets the injection, one gets the water. But they're told here that you're getting the same injection. So if still it doesn't go, then it's proven that it's the injection which is working. So my question is, it is actually the name that worked or taking your mind away from the pain that worked? Obviously, the answer is the holy name works. Holy name makes you take away your mind away from the pain. Both are working. Holy name is also working. And the mind going away from the pain, yes, that is how the pain is still there. Pain is not gone. Mind is away from the pain. Okay, that's what exactly it means to tolerate, no? When somebody tolerates a pain, what is it? Pain is not gone. Tolerance doesn't mean pain is gone. They are just taking their mind away from the pain. So what is the best way to take the mind away from pain? Bhakti. Other techniques may work sometimes, may not work at other times. Bhakti always works. Because bhakti, we are shifting our mind away from some temporary thing to a permanent thing. In other techniques, they are shifting from one temporary thing to another temporary thing. So you're shifting from one temporary thing to another temporary thing. That other thing also is temporary. For some time you can, divert your attention. Like a child is crying, mother ek khilona leke, she tries to stop the child crying by diverting its attention from that whatever it's crying for towards the toy. But it'll stop crying, look at he, again it'll start. Because the child cannot fix its attention on the toy for long. You seen this? You should carefully observe this. It happens. Others will testify. So, we also, if we try to take our mind away by material techniques, that's what all these other self-help techniques they suggest, no? Take your mind away from the pain. But it will not work if you take it away from one temporary thing to another temporary thing. You take it away from temporary to the permanent, Krishna. Then it will work very nicely. You can try this. You can actually try this. It will work. Any other question? Yeah. Hare Krishna Maharaj Dhanuj. Maharaj, few days back, there came a person to me, Maharaj, with few things from his office actually. So, actually he bought a duster and marker, which we use generally in classes. So the person said that Prabhuji, I have bought it from my office because anyway they have so much with them. And I thought, let me take it. Without permission, he took it and he gave to me that Prabhuji, at least for Krishna, for devotional purpose, it can be used. So I was like in dilemma. One side his intention is to serve Krishna, and other side he bought those things without permission from his company. So I was like, Maharaj, can you please enlighten on this? चोरी करते हैं लेकिन भगवान के लिए चोरी करते हैं, हमारे लिए नहीं. So Prabhupada has answered this question. Prabhupada ने उत्तर दिया है कि भगवान के लिए आप चोरी करना चाहते हैं तो भगवान का परमिशन चाहिए. Only on the instruction of Krishna or Krishna's pure devotee representative Prabhupada, you can do something immoral or something sinful or something against the rules and regulations of this world in order to serve Krishna. We cannot imitate some great devotees. We cannot imitate some specific incidents described in the Shastra. We cannot imitate that. So we have to follow the rules. At the same time, we have to practice bhakti. We cannot violate the rules. So he can give a donation
but he has to purchase and give, not steal and give. Any other question? Okay, it's time up. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय.